Hello, good morning, good evening, good afternoon, namaste to you all. Hope you are well wherever you're watching from. Thank you for being here. Happy New Year to you and yours. Hope you had a good few days over the festive period. It was okay for us, got a bit ill, COVID and all that stuff, but you know, nothing that we can't get over. And yeah. Right, so today we'll be looking at Bella's Glory of God full mixtape. I think on Spotify it's classed as an album, but I don't really mind. So yeah, full Glory of God. It's been provided by Gameron. And yeah, no more talking, more watching. Let's get to it. It's all the tracks, 26 minutes long, the full original video. So this could go into two parts. I don't know yet, but anyways. Yes, no more talking, more watching. Let's get to it. Another dimension. यहाँ मैं कौन हूँ मुझे भी पता नहीं. संगीत की बाहों में नशे में धुत मैं दुनिया को अभी तक ठीक से पहचाना नहीं. माँ बोली कर्जे को लौटाना सीख. दुनिया तो शुरू से लालची. कर तू सबका भला मेरे बच्चे तू बन जाएगा खुद बेहतर आदमी. मैंने दिए तुम्हें शिक्षा हिंसा मेरे चाहने वाले कभी करते नहीं है. बेला अभी किसी शक में नहीं है. मेरे पास कसमें देने का वक्त ही नहीं है. मेरा माइंडसेट एक आई है. बेला तेरी हाइट क्या है? 5'9". खोला मैंने बॉम्ब होल और मारी डाइव. मिला मुझे सेम मी another side. See, again, another dimension, open up a portal, that type of stuff. So again, he's just moving on to that next level now. There's a lot, look, I don't know too much about Bella. It's only been recently that I've sort of dedicated a few videos to him. But from what I've learned, Bella, like, I don't know, maybe he's going through this transition phase where he's not really sure on how to sort of release music or anything like that. There was a couple of bits that I watched from Jyoti's interview with Bella, like the little bits that I could sort of gather, if you will. And it seems like Bella is the type of guy who sort of isn't clear on what he wants right now. As in, like, obviously he wants to do music. That's not what I'm saying. I'm saying like what genre he wants to go into or focus more into. Because right now it just feels like, you know, there's a lot of people out there saying 60 plus songs that he's put out. Yeah, okay, that's all well and good, but they're not all great. It's 60 plus songs. Should an artist put out 60 plus songs in 1 year? I don't think that's such a great idea because it just feels like nothing's been managed properly. It's just releasing tracks just for the sake of releasing them, which is like, sometimes it's a waste because you got 60 tracks. That's potentially 3 albums. Like potentially 3 albums. 5 mixtapes. 15 EPs, whatever you want to call it. It's just, you know, there's a lot that you can do with 60 tracks, and to release them, pretty much all of them are singles in 1 year. Sometimes it can be a waste, but that's not for me to say, that's for you guys as the bigger audience of Bella to let me know. Anyway, let's go. मिला मुझे सेम मी another side. बोला मुझे why not हम करें change. मैंने बोला why not फिर देखा मैंने hide out ASAP और लिखी वहाँ home the album home the anthem. दिखे बदलाव मेरे चाहने वाले मुझे भाप के पहला अभी पहले जैसा रहा नहीं. क्यों मैं यहाँ हूँ पर यहाँ नहीं हूँ. अब वक्त आ गया कि इन्हें सच बता दूँ. He even says it himself, I'm here but I'm not here, which links in nicely to the opening the black holes, the wormhole and the dimension and stuff, you know what I mean? So he could be here, but he's probably like in the 6th dimension. I don't know. मेरा वक्त पे काबू बाप सोचता है करता हूँ काला जादू. क्यों मैं मेरी परेशानियों पे पर्दा डालूं. मेरे जैसे डार्क आर्टिस्ट की आदत डालो. तुम भले मुझे ताना मारो. कल मरा परसों कहोगे वापस आप लो. दुनिया का सर्कल छोटा हाथ जोड़ के कहूँ ना मेरे आइडल्स मारो. जिन्हें चाहा मैंने सभी वो सपेरे बने. मैंने भी मदिरा पी के नाच लिया बहुत. लेके आया बिगी और दाई मेरे साथ. अभी 3 भाई लगे जैसे 3 तिया. मेरे 3 तिया मौत में अब टीम में हूँ. नींद के सहारे मेरे ब्रेन में शोर है. पेन ही बहुत है. फक इमोशन फेक प्रमोशन. इन दिनों सब माया चाल है. माया हाथ से हाथ Bella doing some nice shit. Right, here we go. Let's go back to that because that was just a whole nice scheme that he got. बहुत है fuck emotion fake promotion इन दिनों सब माया जाल है माया हाथ से हाथ मिला ले सब मिलेगा जो तू चाहे ये सब मुझे रोकना चाहे बेला कागजों पे लिख रहा रब की बातें दिल में चाकू जिगरा ना पे बस की नहीं तो बस में कुछ भी कर नहीं पाते Yeah, there's some lines that Bella says that he kind of reminds me of a Kanye West that sort of I don't know that sort of
superiority, if you will. I'm writing God's lines on paper and stuff like that. You know, it's kind of like on that Kanye West vibe. Again, that's not for me to say that's a good thing or a bad thing. Kanye West has been one of the most influential artists and producers over the last 20 plus years. So, yeah, who am I to say, right? पे लिख रहा रब की बातें दिल में चाकू जिगरा ना पे बस की नहीं तो बस में कुछ भी कर नहीं पाते हैं मेरे महंगे से कपड़ों के भीतर एक साइको एक किड और एक आर्टिस्ट मेरे जूतों में चलना है and again you can see that in his songs as well, like he's a psycho hit and an artist. महंगे से कपड़ों के भीतर एक साइको एक किड और एक आर्टिस्ट मेरे जूतों में चलना है मुश्किल है फील मेरे कांधे पे खड़ी पूरी मार्केट ये कर रहे टारगेट मुझे मेंटली रिटार्डेड मुझे अब दिखे मुझे कारपेट रेड I can see what he says there. They're calling me mentally retarded. I don't think that's fair to be calling Bella mentally retarded. Like, even if you hated him, it's not about his, you know, mental retardation or anything like that. You know, however you want to put it. It's because many people in DHH right now, fans of DHH. So I just did just so you know as well, I'm gonna do a better video of this, but I did a recent interview with Shah Rule, and we were discussing the you know, the scene, the DHH scene, and he agreed to say, like, you know, it's still in its infancy, it's still building up, it's still becoming bigger. It's not obviously where it needs to be at this point in time. So, and again, that's why sometimes the younger audience will look at Bella and go, oh, that guy's mental, fucking, you know, he's lost it and all this. It's not about mentally retarded. This is art, you know. It's different ways how you express it. Whether you agree with it or not, it's different. But obviously, to go that extra step and to say someone's mentally retarded because of the songs that you're hearing, it's a bit too much, in my opinion. टारगेट मुझे मेंटली रिटार्डेड मुझे अब दिखे मुझे कारपेट रेड बड़े बड़े लोग मेरे साइन के लिए खड़े I manifest and I get what I want, the glory of. Ooh, nice. Beautiful beat. Who produced this beat, by the way, because that guitar in the background is something different. That's beautiful, that guitar. So that was Dimension. Alright, let's go. 1998. Let me guess, year of birth, right? That was me. Oh. I love a song that can get me like a nice screw face going, like, you know what I'm saying? I love that shit. I feel like 1998. I feel like 1998. मेरे मॉम डैड थोड़े साइको प्लस मार काट मेरे घर में मेरा म्यूजिक थोड़ा बैड एस मेरे खून में सब सच में मेरे दोस्तों में मेरे चर्चे कि मैं पागल या मैं जीनियस जब वो सुनते मेरे वर्सेस I'm on a mission तो सोच मत किसी से लूंगा परमिशन मैं टाइम में गया हूँ पीछे और खुद ही को बोला हूँ you are the one तो इसीलिए डिफरेंट मैं बीटों की करूँ अरेंजमेंट अब सोशल मीडिया पड़ा है साइड में लाइफ में काफी अवेयर में तो करूँ मैं पूरा हर डेर में अब गाने दूँ एक ही टेक में सो पुश में किसी भी दौड़ में मैं फर्स्ट हूँ कहीं भी चौड़ में माँ बाप को खुशी ही देना तो भाई खुदा तेरे ख्वाब को सुनेगा जो रख नहीं पाएगा सुखी तू माँ को राख में सेटर नहीं मिलेगा हिसाब नहीं लगेगा मौत का चेहरा भी देखना होगा नहीं बस में तो सुन मेरी जान ना खाया कर कभी भी माँ की झूठी कसमें हाँ कहने से होता जो सच तो पहला शुरू से संगीत के वश में तो करूँ अभी इन लोगों को धन के बदले मैं देता हूँ नाच में I give them poems in exchange of money. It's not even songs, it's poems, it's poetry, and sometimes it, you know, the tracks that I've heard from like the Humble Poet, that is actually some good shit. So but 1990, so again, so Glory of God, I'm guessing this is like sort of God willing type of album, I'm guessing, right? Glory of God. So because of the Glory of God, that's why Bella's come to where he is, right? And then he's going through the different stages. So Dimensions, he sort of entered a new dimension up in the wormhole. 98 is more of a track about his sort of upbringing. And I know he's mentioned a lot about his mother and father as well. And I've actually, no, sorry, there's comments that have been, the people that have commented, make yourself known, by the way, long comments and just giving me a bit more backstory on Bella. And apparently his dad never supported him, his mum was the only one, and that's why. So now I understand more why obviously he puts out tracks dedicated to his mum. So and again, it's just
nice backstory, isn't it? So let's go. पाएगा सुखी तू माँ को राख में सेटर नहीं मिलेगा हिसाब नहीं लगेगा मौत का चेहरा भी देखना होगा नहीं बस में तो सुन मेरी जान ना खाया कर कभी भी माँ की झूठी कसमें हाँ कहने से होता जो सच तो पहला शुरू से संगीत के वश में तो करूँ अपील इन लोगों को धन के बदले मैं देता हूँ नज़्में ना करता को लैप की बात पहला नहीं देता को लैप पे ध्यान ये चाटते कान फिर बोलते ले लिए कानों से बड़े मकान मैं पहले से काफी अजीब पर सभी को पता मैं पहले से बेहतर मैं छोड़ के आया हूँ मेरा वर्ल्ड I'm in another dimension. So there you go, like, you know, he's left the world, another dimension, because he's already said it. I'm too weak from before, but everyone knows I'm much better than before. So again, he even acknowledges his own self, like, you know, he is self-aware of what he's doing and so on. So it's good. I feel like that's good to know, to be honest, because if you're not self-aware, then it's pointless what you say because you don't even know anything about yourself. अजीब पर सभी को पता मैं पहले से बेहतर मैं छोड़ के आया हूँ मेरा वर्ल्ड I'm in another dimension मैं जहाँ से करूँ belong ये रैपर लोग वहाँ के लिए हैं freshers lyrically सभी हैं flexy और कैमरा चालू तो actors ये करते नहीं रैप तो पग पग दे पैसा fake international ला खड़ा करो मेरे सामने 100% मेरे पे ज़्यादा attention मेरी कहानी को लेना मजाक फिर मेरी अवाम के सारे सवालों का देना जवाब के बेला कार when I'm gone शायद मैं हूँ stuck with myself I believe वो साल होगा 1998 I feel like 1998 I feel like 1998 I feel like 1998 That's a good, again, it's just more of an insight into him more than anything else, which is always good. It's always good because, you know, that's what we're here for. We're here for the artists at the end of the day. Like, Deepest Desire. All right, next song. Let's go. This is track number 3. दफ्तर में थे दोनों माँ और पापा मेरी स्कूलिंग में थी कमी पैसा दोनों कहाँ से लाते अब मैं वापस देना चाहता हूँ उनको लाइफ है खुदा तू मेरी ख्वाहिशों पे मोहर तो लगा दे शो पे हाइप जब मैं घर पे लौटूं तो मैं तन्हा मेरे गाने तुमको ये सब नहीं दिखाते मैं जो सच्चा बनना चाहूँ कल सुबह मेरी रात तुम्हें मिलेगी कल रात एक किनारे तू देना मत हौसला अब मेरा जो फोकस है वही एक लौता है जीने का जरिया मैं कलम से बदल रहा सबका नजरिया तुम लोगों की चाहते And again, that guitar in the background, it's sort of like, you know, it fits into the theme of this particular track, you know, that desire, that deepest desire, and it's like, it's a very sort of, let's go back, let's मिलेगी कल रात एक किनारे तू देना मत हौसला अब मेरा जो फोकस है वही एक लौता है जीने का जरिया मैं कलम से बदल रहा सबका नजरिया तुम लोगों की चाहते 10 पर माँ के नाम पे बनेंगे मुंह मैं माँ के पैरों में रख दूं दुनिया ये मेरा deepest desire या मिलेगी फाइट पे फाइट To put the world at my mother's feet is my deepest desire. So again, that's his love for his mother again. So मैं माँ के पैरों में रख दूं दुनिया ये मेरा deepest desire या मिलेगी फाइट पे फाइट नहीं आया था जाने को इजीली बिना को लैब के मिली को खींच के बताया क्या मेरा नाम है ध्यान तक काम पे तुम बना रहे मीम में हंसता अब मेरी जनता बैठी है शांत है उन्हें भी मालूम है बेला के हाथ में खुदा का हाथ है देखो तमाशे चोरी की मैंने खुद ही के घर में चोरी के पैसों से जी रहा सपने फिर मिली एक पैसा उड़ाने को लड़की वो बता के चली गई प्यार होता नकली अब नहीं है टाइम के लोगों को देता फेरू मेरा टाइम ये गानों की राइम लाइक मैं हूँ किताब एंड यू नो किताबें ना कहती कुछ झूठ मेरा सबर ही मेरा एक दोस्त देखूं मैं जहाँ तक वहाँ तक लोग स्टेज पे माँ और मेरा संगीत इन दोनों का साथ में होना एक दिन ये लिखा खुदा ने मुझे से पूछ के मेरे पे उसके होने के सब God has written it after asking from me. Haha, nice. Okay. So again, sometimes that hubris, you know, he expresses that hubris, and you know, there's no issue for him to do that. So that's why sometimes the comparison to Kanye West comes out purely because of it. But apart from that, I think, you know, his flow and his rhyming and his actual style is very good. It's Bella, isn't it? So you can't really say much negativity about it. Just sometimes it's, you know, some tracks are a bit weird, like that Monster, not weird in a bad way, it was just not expected from me, you know, it's a totally different genre that he went with. But yeah, there seems to be, like, at least in the last two tracks anyway, 98 and Deepest Desire, just seems to be that sort of guitar in the background, that theme of, you know, guitars usually, you know, can signify sadness, depends on obviously how they're played, but as with any instruments, by the way.
But yeah, it just seems like there's something going through this track, this album so far. मैं ना कहती कुछ झूठ मेरा सबर ही मेरा एक दोस्त देखूं मैं जहाँ तक वहाँ तक लोग स्टेज पे माँ और मेरा संगीत इन दोनों का साथ में होना एक दिन ये लिखा खुदा ने मुझे से पूछ के मेरे पे उसके होने के सबूत है तुम्हें बताया ये मेरा कसूर है हाँ मुझे ऐसा गुनाह भी कबूल है मेरे को हिट दे बोल तू लायर तू पूरे होश में हो के बेकायर मैंने संगीत को चुना लुटा कर खुदा के सामने अपने डिजायर्स दफ्तर में थे दोनों माँ और पापा मेरी स्कूलिंग में थी कमी पैसा दोनों का से लाते अब मैं वापस देना चाहता हूँ उनको लाइफ पे खुदा तू मेरी ख्वाहिशों पे मोहर तो लगा दे शो पे हाइप जब मैं घर पे लौटूं तो मैं तन्हा मेरे गाने तुमको ये सब नहीं दिखाते मैं जो सच्चा बनना चाहूँ कल सुबह मेरी रात तुम्हें मिलेगी कल रात एक किनारे Deepest Desire with that phased guitar, honestly, it's just that's such a nice beat.